हेलो स्टूडेंट्स पूर्व क्लास रे डिस्कशन करथिले सिलेक्शन रूल must be obeyed to get the signal in ultraviolet spectra. First सिलेक्शन रूल थिला कोन डेल्टा से 0, सेकंड थिला कोन जदि 0 to on 0 ट्रांजिशन हुए देन अलाउ ट्रांजिशन हबो स्पेक्ट्रा मिलिबा हमको सिग्नल मिलिबो इन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी सिमिलरली U to G but same G to G and U to U is a forbidden एमि ट्रांजिशन हुए ताले कोन सिग्नल हमको मिलिबनी पूर्व में कहिथिले there are only 4 transition in ultraviolet spectra but other transitions are why not allowed. That means हमथिला कोन सिग्मा टू सिग्मा स्टार पाई टू पाई स्टार हम देखिथिले कोन थिला ना सिग्मा टू सिग्मा स्टार अलाउ ट्रांजिशन थिला पाई टू पाई स्टार थिला n टू sigma star thila then n to pi star thila. These 4 transitions are only considered in ultraviolet spectra but other transitions are not considered because the other transitions are forbidden transition not allowed transition केमती forbidden हो कि allowed हो देखो प्लेडी सिलेक्शन रूल डिपेंड करी सिलेक्शन रूल जोगु अदर ट्रांजिशन आर नॉट पॉसिबल क्वेश्चन आसीबो एडी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो which are allowed transition which are not allowed transition क्वेश्चन देखि दो एडी which are allowed transition which are not allowed transition as per एडी कोन देखो एडी मतलब लिखले सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये allowed why is it allowed sigma orbital suppose p orbital consider करियो p orbital ध्यान देडी p orbital this is minus this is plus this is p orbital यदि p orbital sigma बॉन्ड करियो केमति करियो ना आ गुटे p orbital सहित ये प्लस ये माइनस जे मान ओवरलैप करंती देन कम फॉर्म sigma bonding orbital this is sigma this value but say p orbital this is plus this is minus this is plus already कौन करिबा तो इंटरेक्शन करिया एटी माइनस दिस इज प्लस एटी यदि इंटरेक्शन हबो एटी कौन तयारी हबो ना सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एटी कौन तयारी जोटी एटी तयारी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल दिस इज सिग्मा स्टार जो सिग्मा जीरो हबो ना ऑन जीरो हबो देखो एटी यदि याको मो सेंटर नै जी सेंटर दिस इज सेंटर रो यदि एई पट को जाए प्लस मिले सेंटर यदि एई पट को जाए प्लस मिले so this is zeroed sigma is zeroed but एठी देखो यदि ये सेंटर हुए यदि एई पट को आसीबा दिस इज प्लस यदि एई पट को जिबा दिस इज माइनस सो कोन जे सेंटर ऑफ सिमेट्री नाही सो दिस इज कोन ऑन zeroed u दिस इज कोन u दिस इज g so g to u the transition is g to u is allowed transition so first sigma to sigma star is allowed transition but जदि सिमिलरली हम देखिबा pi to pi star देखिए एडी pi to pi star ले pi orbital केंद्र फोर्स हो जाएगा एडी pi to pi star pi orbital suppose this is plus this is minus this is plus थोड़ी कौन करछि मोडी देखे दोजी pi bonding formed by partial overlapping partial means ये प्लस ये माइनस
E plus E minus যদি এমতি ওভারল্যাপ করন্ত এটি দেখো পাই বন্ড তৈরি হবো দেখো এটি প্লাস প্লাস আছে মাইনাস মাইনাস আছে ওভারল্যাপিং বঢ়িয়া হবো এটি কোন তৈরি হবে না পাই বন্ডিং অরবিটাল পাই বন্ডিং অরবিটাল যদি পাই অরবিটাল এটি মু কোন করিবি এটি কোন করদি যদি এমতি নেই যায় this is plus this is minus this is minus this is plus এটি তো অরবিটাল তৈরি হবো কোন তৈরি হবো পাই অ্যান্টিমনি অরবিটাল এখানে ওভারল্যাপ করলে প্লাস মাইনাস ওভারল্যাপিং this is plus minus ওভারল্যাপিং কোন তৈরি হবে পাই অ্যান্টিমন্ডিং অরবিটাল পাই অ্যান্টিমন্ডিং অরবিটাল তাহলে তো জিরোড কি হবে অন জিরোড কি হবে জিরোড কোন হবে অন জিরোড কোন হবে देखो डी इतना यदि मैं ये सेंटर सपोज यदि सेंटर सिमेट्री देखिबा यदि सेंटर यदि याड गुजिबा डाउन टुवर्ड दिस देन कम मिलुची माइनस सेंटर यदि याड गुजिबा कम मिलुची प्लस सिमिलरली सेंटर यदि याड गुजिबा कम मिलुची प्लस यदि याड को आसीबा कम मिलुची माइनस प्लस माइनस सो दिस इज ऑन जीरो दिस इज यू ऑन जीरो दिस इज ऑन जीरो तो मैंने पाई is on zeroed pi orbital is on zeroed similarly देखो एठी देखो this is center याड को जिबा goes माइनस मिलिबो यदि ए पडू जिबा कम मिलिबो माइनस मिलिबो similarly यदि ए पडू जिबा कम मिलिबो प्लस मिलिबो ए पडू जिबा कम मिलिबो प्लस मिलिबो in both direction को प्लस प्लस मिलुची same value same so this is what this is zeroed so pi to pi star transition is allowed because pi is on zeroed pi star is zeroed on zero to zeroed কোন allowed transition तो जो ट्रांजिशन हम देखिए सिग्मा टू पाई स्टार तो देखिए सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज अलाउड ना फॉरबिडन देखो sigma is zeroed pi star is zeroed so this is a forbidden transition similarly देखिए sigma to pi yes this is zeroed this is on zeroed this is allowed transition so sigma to pi is allowed transition so तेणुकरी allowed transition जो अच्छे से कंसीडर कराइछे rather not consider so mainly the intensity अनुसार जो माने अधिक इंटेंसिटी देखांती इंटेंसिटी सिग्नल इज इंटेंस जो हमर थाए that transitions are considered in ultraviolet spectra so these were selection rule so selection rule रो कहानी खत्म जेना आगे को जिबा देखिबा बहुत इंपोर्टेंट these are very important for your MSc entrance रे क्वेश्चन थियोरेटिकल आसीबनी एमदी क्वेश्चन आसे जोडा पिला करि पारंतनी बुझी पारंतनी कोन जीरोड कोन ऑन जीरोड कोन एनी क्वेश्चन पकई जेसे बहुत इंपोर्टेंट which transition occurs in which case चारोटा ट्रांजिशन अछि हम देखिले कॉमन ट्रांजिशन देखिले sigma to sigma transition रगो आमा पगडी नोट इंपोर्टेंट नोट sigma to sigma transition कोड केतर हुए जोडी CC सिंगल बॉन्ड थाए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रे कोन देखाय sigma to sigma star transition से sigma sorry n to sigma star similarly देखिए हमें चार ट्रांजिशन हमरो n to sigma star transition कोड देखाए जोडी कोन थिबो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थिबो सिंगल बॉन्ड थिबो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थिबो जेन कहबी OH बडी लोन पर अछि OH similarly कहबी कोन ना NH2 जोडी कोन थिबो सिंगल बॉन्ड थिबो कोन थिबो लोन पेयर दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन
एई केस रे कोन देखियो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जोडी कोन थिबो सिंगल बॉन्ड थिबो सिंगल बॉन्ड एडी सिंगल बॉन्ड अछि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थिबो देन टू सिग्मा स्टार देखिबो जे जोडी देखियो कार्बोनिल ग्रुप सॉरी C2 double bond O this is carbonyl group this carbonyl group जोडी देखिबा एडी कोन थिबो कोन देखिबो एठी ना N2 pi star देखिबो एठी N2 pi star आ कोन देखिबो एठी pi to pi star transition pi to pi का एडी pi bond अछि एडी pi bond अछि एडी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पर अछि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अछि so in carbonyl रे both transition occur in carbonyl means that is aldehyde pare ketone amide carboxylic acid both transition is shown both transition is shown in case of this so remind this is very important next we will discuss what is the chromophore oxochrome dita term ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା very important term ଆଉ ଦେଖିବା chromophore and oxochrome chromophore and oxochrome so first ହେଲା chromophore CHROMOPHO chromophore chromophore is a unsaturated compound it is a unsaturated compound which absorb ultraviolet ray which absorb এই যে ডেফিনেশন লেখিব পিলে এটি বহিবে লেখা ডেফিনেশন বড় বুঝো chromophore means unsaturated compound जो compound रे डबल बॉन्ड थिबो डबल बॉन्ड means कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हे पारे कार्बन ओ डबल बॉन्ड हे पारे कार्बोनिल ग्रुप थिबो और कोन थिबो इथिन ग्रुप थिबो unsaturated compound absorb UV radiation ultraviolet radiation and show color and show ultraviolet visible radiation which absorb ultraviolet visible radiation and show color show color ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ କଲର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି ପତ୍ର ଯୋଉ ଗଛର ଟ୍ରି ର ପତ୍ରର କଲର ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଏ କାହିଁକି ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଏ this is due to the chromophore means the unsaturated compound or the unsaturated portion of the molecule which show color that unsaturated compound may be C to C double bond कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हे पारे और C डबल बॉन्ड होई पारे कार्बोनिल हे पारे और कोन हे पारे अल्किन अल्काइन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जोड़ थिबो that compound is called chromophore which absorb ultraviolet radiation and show color this chromophore to define kariba kon likhe dale this is the portion of the molecule this is a portion of the part of the molecule which absorb ultraviolet radiation and show color যদি নোট লেখা লেখো the portion of the compound which absorb ultraviolet radiation and show color that is called chromophore
that is called chromophore. ତାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଛ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବେଳେ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଲାମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସ ସତରେ ବାହାର କରୁଛ କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ ଏମିତି ଲଗେଇଦିଅ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏମିତି କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଦିଏ ଦେନ୍ ଏଠି ଲେଖିଥିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଦେଇକି ଏଠି କଣ କରିଥିବ ଏମିତି ଏମିତି ଲେଖିଥିବେ ଏଠି ତାମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ସରିନି ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ହୋଇନି ଇଏ ଚାଲିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ନା ନାଇଁ ତାମାନେ ଯଦି କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଆମେ କଲର ଦେଖିବା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର କଲର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଆମେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ୟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଦେଖ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଅଛି ଏଠି ମାନେ ଅନସାଚୁରେସନ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଦ portion of the molecule which absorb ultraviolet rays and show color. This is chromophore. This is a chromophore. So chromophore maybe this is a chromophore C double bond C double C double bond C. Butadiene is one type of chromophore. One type of chromophore. C double bond O H. This is C. This is aldehyde. This is one type of chromophore because C double bond O is present here. This is chromophore. Chromophore कौन करे अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करे और कलर शो करे द chromophore epsilon value that is epsilon value केते chromophore रो epsilon value 10 to power 3 ରୁ कम थाए ध्यान दे some chromophore value of chromophore जे हम लिखबी जे हम लिखबी see here chromophore କେତେବେଳେ chromophore ଅଛନ୍ତି the chromophore value epsilon value less than 10 to power 3 ଥାଏ କେତେବେଳେ chromophore ର value କି value epsilon value intensity value greater than 10 to power 4 ଥାଏ जो chromophore ର value the chromophore value less than ଥାଏ it gives less intense signal ଆଗରୁ ଆମେ discussion କରିଛନ୍ତି this is lambda then gives just this but this is more intense so gives lambda is maximum this is lambda gives intense signal intensity is more because height is more signal intensity of signal so the next we will discuss what is the oxochrome so right what is the oxochrome chromophore ର intensity ବଢେଇବା ପାଇଁ chromophore ର intensity को ବଢେଇବା ପାଇଁ जो कौन सी साइड ग्रुप ऐड करिबा साइड सब्स्टिट्यूएंट इज एडेड that means oxochrome bring the what is oxochrome oxochrome को oxochrome हैला a saturated compound देखो a saturated compound a saturated compound containing non-bonding electron saturated compound containing non-bonding electron and attached to the chromophore
chromophore. A saturated compound containing non-bonding electron and attached to the chromophore to increase the intensity value is called that compound is called oxochrome. That compound is called oxochrome. देखिए oxochrome example कौन होई परिबो example that is OH होई पारे OH group होई पारे और NH2 होई पारे NH2 these are the group oxochrome groups compound रे attached है so this is about the concept of chromophore and oxochrome ଯୋଗୁ इंटेंसिटी बढ़ी जाए कहार क्रोमोफोर इंटेंसिटी बढ़िबा द्वारा से चारिटा कांसेप्ट आसे ऑक्सोक्रोम द्वारा क्रोमोफोर इंटेंसिटी बढ़िबा द्वारा आउ चारिटा कांसेप्ट आसे दैट कांसेप्ट सर कोन देखोडी द ऑक्सोक्रोम द्वारा क्रोमोफोर इंटेंसिटी बढ़ी जीवो इंटेंसिटी ऑक्सोक्रोम इंटेंसिटी बढ़ जाई पारे मेनली बढ़ाए ना कौन कौन हुए देखिए देखो कौन कौन हुए बाथोक्रम की सेफ्टी कौन हिस्सोक्रम की सेफ्टी कौन हाइपोक्रोमिक सेफ्टी कौन देखिए देखो this diagram again put draw the diagram this is a observance बहुत पॉइंट लिखी दिए a और log I नॉट I भी लिखी दिए सेम a इक्वल log I नॉट बाय I लिखा लैम्बडा वैल्यू दिस इज लैम्बडा वैल्यू सिग्नल के हमको ब्रॉड तो सिग्नल को जो सिग्नल कौन कहा जाए ये हुए सिग्नल कौन कहा जाए ना बैंड कहा जाए आईआर को जगह पिक कहा जाए एटा मन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आस्तिला पूर्व प्रीवियस क्वेश्चन आसीची कौन क्वेश्चन आस्तिला द सिग्नल ऑफ अल्ट्रावायलेट इज कॉल्ड व्हाट पिक ना कौन अल्ट्रावायलेट सिग्नल कौन कहा जाए ना बैंड कहा जाए BAND दिस इज नॉट पिक दिस इज बैंड और यू कैन से बैंड जहां और ब्रॉड पिक BROAD ब्रॉड पिक ब्रॉड माने कोड वाइड ब्रॉड पिक और बैंड आईआर कौन कहा जाए आईआर रो सिग्नल कौन कहा जाए आईआर सिग्नल है पिक नॉट बैंड आईआर पिक दिए सिंपली ध्यान रोटेशनल माइक्रोवेव कौन हुए कौन मिले लाइन माइक्रोवेव सिग्नल को लाइन कहा जाए आईआर सिग्नल को पीक कहा जाए अल्ट्रावायलेट सिग्नल को बैंड कहा जाए आईआर केम दिखाए आईआर एनएमआर आईआर एनएमआर सेम पीक मींस ये बढ़िया पीक दिस इज पीक नॉट बोल्ड शार्प दिस इज पीक आईआर एंड एनएमआर पीक दिखाए दिस इज लाइन इधर माइक्रोवेव रे लाइन में माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा द सिग्नल इज लाइन this is band in ultraviolet this is ultraviolet band it's a broad peak so the lambda value variation with a कौन है what is lambda max हम किन बाहर करिया ये ग्राफ lambda max हम ये बहुत इंपोर्टेंट lambda max what is lambda max लिखिए lambda max 30 the lambda value at which the lambda value at which the intensity is maximum देखो various name दिए देखो एडी एडी असला देखो
धीरे धीरे जब हाइट तो पिक द बैंड हाइट इनक्रीज कर सब हाईएस्ट इनक्रीज कर जोटी इंटेंसिटी मैक्सिमम दिस इज लैम्बडा दिस इज लैम्बडा 1 दिस इज लैम्बडा 2 दिस इज लैम्बडा 3 जोटी इंटेंसिटी मैक्सिमम the height is maximum that is called that wavelength is called lambda max lambda max हमको कोडी मिलिबो जोटी height intensity maximum the lambda value at which intensity is maximum or you can say the epsilon value the lambda value at which the intensity is maximum is called lambda max so lambda max हम केम डिफाइन करबा एडी देखो एडी मु लिखि दोजी एटी लिखुजी what is lambda max lambda max हम केम डिफाइन करिया what is lambda max what is lambda max एडी तो lambda max what is la wavelength maximum the lambda value at which the wavelength at which the wavelength at which the wavelength at which we get maximum intensity we get maximum intensity lambda the wavelength at which we get maximum intensity the height is maximum so intensity is maximum intensity is maximum the wavelength at which we get maximum intensity that wavelength is called intensity I mean that wavelength is called lambda max or maximum wavelength that that wavelength is called lambda max is called lambda max is called lambda max so oxochrome कौन करे oxochrome increase intensity and the lambda max value oxochrome कौन करे डेफिनेशन लिखि दियो lambda max रो देन आगु जे हम लिखिबा एटी कहूछु एटी oxochrome the group ना oxochrome कौन हेल्प करे oxochrome increase the intensity or observance a value and आपण हुए increase the lambda max बहुत important है then आगु जो देखिया what is Woodward rule next देखिए हमें आ गोटे कॉन्सेप्ट सला पर हमें वुडवर्ड रूल देखिबा वुडवर्ड रूल पे स्पेशल आउट पार्ट करबा हमें एठा केवल देखिला कोन नाम बाथोक्रमिक शिफ्ट कोन हिप्सोक्रमिक शिफ्ट कोन सब देखिबा एठी डायग्राम रो देखिबा एठी डेफिनेशन निजे लिखिबो डायग्राम रो देखिबा डायग्राम रो एठी डायग्राम पुणी करछ डायग्राम this is a this is lambda diagram put here this is lambda max
when increase the oxochrome increase the lambda max lambda max এইটি ଅଛି যে ঠিক গলা যে ইনক্রিজ করে lambda max যদি ইনক্রিজ করে বা lambda max ডিক্রিজ করে কম হবার পড়ে if lambda max increases then that shift is called bathochromic shift lambda max value যদি ইনক্রিজ করে that is called bathochromic shift bathochromic shift or kono or red shift is called red shift why it is called red shift ଜାଣିଛନ୍ତି VIBGUIOR VIBGUR this is red lambda value increases violet to red blue lambda value কম থাকে blue lambda value কম থাকে red lambda value ଅଧିକ থাকে lambda max increase ହେଲା ମାନେ red shift যদি কমিলা কিଏ blue shift କଣ କରାଯାକୁ lambda max decreases that is called hypsochromic shift hypso hypsochromic shift or कौन blue shift why blue shift ର lambda value less than red shift lambda value increases by oxochrome gives bathochromic shift lambda value decreases if by the oxochrome then give hypsochromic shift generally thila ethi lambda max ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସୋକ୍ରୋମ ଇନକ୍ରିଜ କରିଗଲା ଅକ୍ସୋକ୍ରୋମ ଆଟାଚ ହେଇଗଲା chromophore ରେ then bathochromic shift is shown means lambda value increases lambda max increases similarly if intensity increases gives hypochromic shift hyperchromic shift if intensity increases the height increases then it gives hyperchromic shift the intensity increases hyperchromic shift the intensity decreases hypochromic shift give hypo hypochromic shift hypochromic shift বলে লেখা আছে ডেফিনেশন দেখি ওটা গ্রাফ বুঝো গ্রাফ বুঝে সব মনে রয়ে যাবে ওটা গ্রাফ মনে রয়ে গেলে ডেফিনেশন মনে রয়ে যাব দেখা দেখা সো চল ଦେଖିବା some important question କେମିତି କରି ଯଦି ଆମର ଆସେ question କେମିତି କରିବା question is given lambda max value order or lambda value order lambda max value order of the following compounds number 1 given this is one type of compound carbon ଅଛି अब एमडी लिखिबार और एमडी लिखि परियो नो प्रॉब्लम CH2 double bond C it is CH then bond CH2 CH then CH3 this is compound 1 2 3 CH2
same. So ये देइछि, then another compound, this is this double bond, then double bond, then another compound is given here. Find the lambda max order, lambda max order and energy order लिखी दे energy order कौन है जो. So कहारा lambda max अधिक हबो, means lambda value wavelength order लिखि परिबा, एटी कोन ना wavelength order, wavelength order, wavelength order of the following compounds. Kahara maximum lambda value is longer wavelength is shorter wavelength. The wavelength order is higher. This is the lambda value higher. This is the lambda maximum value. This is lambda minimum value. Higher than this, than this. लेकिन देखिए केम जानिबा ये lambda max अधिक हबो, जहारा lambda value अधिक हुए रेडी एनर्जी कम हबो. हम जानछन आपण बुझी केम दिए देखिया एटी. Lambda value is more in this case. One important point, एक मन रखिबा, important point to answer this question, more is the conjugation. First लिखिया more is on saturation means double bond. More is the double bond and more is the double bond and conjugation. More and conjugation. More first लिखिए more is double bond is more is double bond, then lambda value is longer or more, lambda value is more or longer, you can say longer, LONGR is more. First point, more is the unsaturation or double bond, lambda value is more. Second point kono, more is the conjugation, more is the conjugation মানে lambda value is more, lambda value is more. देखो तीनटा कंपाउंड, देखो এই कंपाउंड कोन होइची, गोटिए डबल बॉन्ड अछि, वन डबल बॉन्ड एटी कोन अछि, दी डबल बॉन्ड. कहलो मोर जो डबल बॉन्ड lambda value मोर एले या ठारो ये अधिक हला काहे कि टू डबल बॉन्ड प्रेजेंट. So lambda value is maximum here, but see here एठारे दुटा डबल बॉन्ड, एठी दुटा डबल बॉन्ड, गोटे कहार lambda max अधिक हबो, एठी conjugation नाही, there is no conjugation. Conjugation means alternate double bond in alternate position. Double bond present in alternate position is called conjugation. What is conjugation? Conjugation means conjugation means alternate double bond. Double bond is present in alternate position. Here double bond here, chala, there is no alternate bond, but here the double bond, gote chala, the double bond. This is conjugation. Alternate position है double bond. एठारे conjugation अच्छी, there is conjugation, but there is no conjugation, no conjugation. So lambda max is more than this, this.
One tricks to remember the question, to solve the question. Again, the energy order, the energy is inversely proportional lambda. So this is lambda value higher, longer wavelength. So energy here less energy, decrease. This is higher energy. This is high energy. This is high energy. Energy order is inverse. This is high energy. This is low energy. This is one type of question. Another type of question. Another type of question. Solve for out question. See here. Another type of question. Question कौन हवा? Question lambda max order. Lambda max order. Question ହେଲା କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ compound ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଲା then both ର alternate position conjugation ଅଛି but ଏଠି କଣ ଅଛି ନା CH ଲାଗିଛି ଏଠି ଗୋଟେ CH ଲାଗିଛି which one is more lambda max value କାର ହବ ଅଧିକା यार ଅଧିକା ହବ lambda max value the lambda value is more here lambda value is less but energy is higher this compound energy is lower this compound ये compound energy low lambda more ଏଠି energy higher lambda lower କାହିଁକି both ରେ conjugation ଅଛି yes conjugation ଅଛି but ଏଠି ଦେଖ this is more substituted compound the more substituted compound ତ ଏଠି ଗୋଟେ substitution ଲାଗିଛି ଏଠି ଗୋଟେ substitution ଲାଗିଛି ତା ମାନେ more is the substituted compound lambda value is more ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ point ଲେଖିପାରିବା ଆମେ ଏଠି କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ point ଲେଖିପାରିବା କଣ question ଲେଖିପାରିବା କଣ ଏଠି question କରିବା ପାଇଁ more is the substitute more is the substituted alkenes more is the substituted alkene more is substituted alkene more is the wavelength more is the lambda more is the lambda so this was the question so in next part we'll discuss Woodward-Fisher's rule Woodward-Fisher's rule very important next part round discussion kariya what is Woodward-Fisher rule what is Woodward-Fisher's rule next class so next going to next part one question for you question ଟା ନିଜେ କରିବ question for you question ହଉଛି କଣ see the question benzene ring କଣ ହେଉଛି benzene ରେ then CH double bond CH2 your compound then another compound is another compound is given as in this compound is given here then CH2 normal CH2 then lambda max order then energy order do yourself
Then go to next part ରେ ଆମେ ଦେଖିବା Woodward's Fisher rule.